Welcome viewers to my channel electrical tutorial. So after watching my videos, if you think that my videos are helpful to you all, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. Okay, so let's start our today's session on industrial instrumentation. So the first question is, what is industrial instrumentation? Okay, so industrial instrumentation deals with different types of industries. The industries like power generation industry, that means power station. It may be hydroelectric station. It may be thermal station. It may be nuclear power station. Or uh, industries like uh, oil refineries industries or other manufacturing industries. Okay. So all of we know that in all these industries, so the manufacturing unit is installed outside, and the operator made the communication uh, between the machineries and the operating system from the control room. Okay. So how the communications are made? So in that diagram, so you see it is written here the process. Okay, the process means the machineries which generates the output, right? Output. So to control the process, we need a controller, right? To control the process, we need a controller and FCE. That means final control element. Okay, final control element. So here the controller is called the brain of the system because it can take the necessary decision to control the output, right? Now what is FC? FC is the final control element which execute the decision taken by the controller, right? And one measuring device is connected between the process and the controller to get the output response of the process at every instant of time. यहाँ पे जो मेजरिंग डिवाइस है ये क्या करेगा, हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस है ये प्रोसेस का ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या आउटपुट जा रहा है उस आउटपुट का रेस्पॉन्स कंट्रोलर को देगा, राइट? एंड कंट्रोलर में हम हमारा आउटपुट जो चाहिए वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू कंट्रोलर में हम फेट करेंगे, उसी हिसाब से कंट्रोलर क्या करेगा, उसका आउटपुट रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, and according to the output response final control element will execute the decision taken by the controller, right? This way our generation process our generation process continues. Okay, now in our system we have taken an example like what is process. So in our case the process is for example boiler temperature control. हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मल स्टेशन में एक बॉयलर में क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है? एंड FC फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, in that case the final control element will be electric heater because heater only can generate the temperature, right? And controller, in our case the controller may be PLC based controller, maybe PID controller, maybe HMI, that means human machine interface, and PLC based controller, right? And last component is the measuring device. The measuring device may be sensor or transducer, right? Sensor and transducer. So
यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होता है उसी को लेके हमारा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट स्टडी होगा। ठीक है, तो उसी के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे अभी, जो है हैज़ार्डस एरिया। हैज़ार्डस एरिया। So, first of all, let's see the definition of hazardous area. An area in which an explosive gas atmosphere is present or may be expected to be present is called hazardous area. इसका मतलब ऐसा कोई एरिया जहाँ पे हमारा एक्सप्लोसिव गैस एटमॉस्फेयर प्रेजेंट हो भी सकता है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स हमारा कोई एरिया है, इसमें अगर कोई गैस पार्टिकल्स होगा जो एक्सप्लोसिव गैस होगा, ये अगर एक्सप्लोसिव गैस अगर प्रेजेंट होता है तो हम लोग उस एरिया को बोलेंगे हैज़ार्डस एरिया और हैज़ार्डस लोकेशन, राइट। नाउ let's see how we can classify the hazardous location. So hazardous location basically we can classify into two sectors or two types. One is either class or division or group, right, which is used only in US and Canada, right, and other system is zone system, and zone systems are used in rest of the country. That means except this US and Canada. यूएस और कनाडा में क्लास डिवीजन और ग्रुप सिस्टम फॉलो होता है, और इस दो कंट्री को छोड़ के वही सभी कंट्री पर इंक्लूडिंग इंडिया हमारा जोन सिस्टम कंसीडर होता है, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट हम क्लास सिस्टम को देखते हैं। तो क्लास सिस्टम में क्या क्लास सिस्टम क्या होता है? लोकेशन where flammable gases may or may not be present in sufficient quantities to produce explosion. That means ऐसा कोई एरिया जहाँ पे फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट हो सकता है इन सफिशिएंट क्वांटिटी में टू प्रोड्यूस एन एक्सप्लोशन, राइट। नाउ द एग्जांपल ऑफ दिस flammable gas is like hydrogen. We know hydrogen is a flammable gas. So, the area where flammable gases may be present or may not be present in sufficient quantities to produce explosion is known as class 1 zone. Okay. Now, let's move to the class 2 zone. So, class 2 is the location where combustible dust, previous case was gas, combustible gas, and this case is combustible dust, may or may not be present in sufficient quantities to produce explosion, right. That means in a area if combustible dust are present, okay, then it is called class 2 zone. And third one is class 3 zone, right. So it is the location in which combustible fibers may or may not be present in sufficient quantities to produce explosion. The example is cotton fiber. That means if in an area the combustible fibers are present, then it is called class 3 location. So the basic comparison is class 1 location will be that location where combustible gases are present, right, and class 2 location class 2 zone class 2 location is the location where combustible dust are present, and class 3 location is that location where combustible fibers are present, right. Next category is the division category. Okay, so first of all let's see the division 1. It indicates that the hazardous material has a high permeability of producing an explosion. So division 1 कौन सा होगा? जिस लोकेशन में हमारा जो हैज़ार्डस मटेरियल होगा, मटेरियल में बी गैस, मे बी डस्ट, मे बी फाइबर, राइट, इट मे बी गैस, मे बी डस्ट, मे बी फाइबर.
तो ये जो हैजार्डस मटेरियल होगा वो एक्सप्लोशन प्रोड्यूस करने के लिए प्रोबेबिलिटी उसका हाई होगा, ठीक है। सो दैट वन इज कंसिडर्ड एज डिविजन कैटेगरी, डिविजन 1 कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज डिविजन 2 कैटेगरी, उसका ऑपोजिट होगा। It indicates that the hazardous material has a low probability of producing an explosion. That means in a area the hazardous material like gas, like dust, like fiber will produce low probability of explosion, right? Next part is the group. Okay, so first of all, what is group? Group defines Group defines the type of hazardous material in a surrounding atmosphere. That means in a surrounding atmosphere how much hazardous materials are available, that only defines by the group. Okay, so we can divide the group into two categories. The first category is group A, B, C, D, right? And all these categories are for only gases, राइट। सो इन क्लास सिस्टम में हम लोग देखे थे कि क्लास 1 कैटेगरी में सिर्फ गैस को लेके कंसिडर होता है, ठीक है ना। इसके लिए ग्रुप ए बी सी डी जो है वो गैस के साथ डील्स करता है, ओके। इसके लिए क्लास 1 कैटेगरी आता है। और जो ग्रुप ई एफ जी होगा वो डस्ट पार्टिकल और अदर फ्लाइंग्स को लेके डील करता है, जो क्लास 2 और क्लास 3 के अंडर में आता है, राइट। द नेक्स्ट सिस्टम इज जोन। So in zone system we can divide the zone into three categories: zone 0, zone 1 and zone 2 system, right? So basically in India these zone systems are followed. Okay, now what is zone 0 system? It is the area where flammable gases which are present for long period of time, right? So typically more than 1000 hours per year. That means in a particular area, if flammable gases are present more than 1000 hours per year, 1000 hours per year, then that location is called zone 0 location. किसी भी लोकेशन में अगर फ्लेमेबल गैसेस 1000 आवर पर ईयर से ज़्यादा रहता है तो उसी लोकेशन को हम बोलते हैं जोन 0 लोकेशन। उसको हम इसके बाद एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। Now zone 1 location will be the flammable gases which are present under normal operating condition, right? Typically the time will be 10 to 1000 hours per year. That means if we have a location and flammable gases are present in between 10 to 1000 hours per year, 1000 hours per year, then it is called zone 1 condition and it is considered as normal operating condition, right? And last one is zone 2 system. It is the location where flammable gases are present for short period of time, right? That means how much time? The time will be less than 10 hours per year. If we have a location and the flammable gases are present for a short period of time like less than 10 hours per year, then that location is called zone 2 system. Now let's understand these two zones, that means zone 0, zone 1, zone 2 using a small example. Okay, all of we have seen the petrol pump, right? So here I have considered the example of a petrol pump, right? पेट्रोल पंप पे क्या होता है, एक यहाँ पे अंडरग्राउंड में क्या होता है, एक फ्यूल रिजर्वर होता है, राइट? फ्यूल रिजर्वर होता है, उसमें फ्यूल स्टोर रहता है ना, उसमें फ्यूल स्टोर रहता है। और ग्राउंड के ऊपर में एक मशीन होता है जिसको बोलता है फ्यूल डिस्पेंसर मशीन, राइट?
सो उसी मशीन के साथ जो अंडरग्राउंड रिजर्वर होगा वो पाइप से कनेक्टेड होगा और मशीन के थ्रू हम लोग व्हीकल्स में फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो, हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे कि हमारा जो जोन ज़ीरो सिस्टम है उसमें 1000 पर ईयर्स 1000 आवर्स पर ईयर से ज़्यादा टाइम पे कॉम्बस्टिबल गैसेस प्रेजेंट होगा और कॉम्बस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, जो अंडरग्राउंड रिजर्वर होता है उसमें सभी टाइम फ्यूल स्टोर होता है ना। दैट मीन्स वी कैन कंसिडर द fuel availability time as more than 1000 hours per year. That's why it is considered as zone 0 location. Okay, zone 0 location. इसके बाद क्या होगा, अगर हम डिस्पेंसर मशीन में पंप ओपन करते हैं, पंप को स्टार्ट करते हैं, तो वो पंप रिजर्वर से फ्यूल लेके क्या करेगा, व्हीकल्स में इंजेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर जो व्हीकल्स इंजेक्टिंग पार्ट होता है, जो पोर्शन होता है, उसी पोर्शन में क्या होगा, थोड़ा बहुत दिस फ्यूल सभी टाइम अवेलेबल होता है, ठीक है ना। मतलब पूरा दिन किसी ना किसी व्हीकल में फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो उसी हिसाब से ये जो एरिया होगा फ्यूल इंजेक्शन एरिया, उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि फ्यूल अवेलेबल है 10 to 1000 आवर्स पर ईयर, right? That means normal operating condition. That's why it is considered as zone 1 system, right? और पेट्रोल पंप के जो सराउंडिंग्स एरिया होगा, सराउंडिंग्स एटमॉस्फेरिक एरिया होगा, उसी एरिया में क्या क्या रहता है, विंड प्रेशर रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो कॉम्बस्टिबल मटेरियल्स होता है वो एटमॉस्फेयर के साथ मिल जाता है। इसके लिए इसी एरिया में जो कॉम्बस्टिबल मटेरियल होगा उसका प्रेजेंस हम कंसिडर कर सकते हैं लेस देन 10 आवर्स पर ईयर, राइट। मतलब वहाँ पे तो विंड होता है ना, तो उसमें जो भी कॉम्बस्टिबल गैस मटेरियल होगा वो धीरे धीरे विंड के साथ मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर में मिक्सड हो जाएगा। तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे जो पूरे साल में जो फ्यूल का कंसंट्रेशन होगा वो लेस देन 10 आवर्स पर ईयर का होगा। इसीलिए हम इसको जोन 2 सिस्टम के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। So this is all about the concept of hazardous location, hazardous material, its classification. Okay, hope all of you have understood the each and every concept. If you have any queries or any doubts, you can comment in the comment section of the video. Thank you for watching.